बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेट्स मेडिसिन। इस वीडियो में मैं आपको अल्ना के बारे में बताऊंगी। जैसा कि इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रेडियल बोन ऑफ द फोर आर्म, सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द अल्ना। जैसा कि we know that the bones of the forearm are the radius and ulna. Radius is lying laterally and the ulna is always situated on the medial aspect. So basically जब भी आपके पास एक body anatomical position में होती है तो ulna is always situated on the medial aspect of the forearm. इसका मतलब है कि जो little finger की side होती है वहाँ पे ulna situated होता है. Now after knowing about the anatomical position of the ulna, as we know that it is actually a long bone, तो जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनकी ऑस्टियोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. दैट इज़ द प्रॉक्सिमल एंड और द अपर एंड, द शाफ्ट एंड द लोअर और द डिस्टल एंड ऑफ द बोन. तो सबसे पहले वील टॉक अबाउट द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द अल्ना, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द अपर एंड ऑफ द अल्ना. This is actually the proximal end of the ulna. Here you can see. अगर मैं आपको इसका lateral view दिखाऊं तो यहाँ पे you can observe that we have a semilunar shaped concavity or a depression, and this depression is actually known as the trochlear notch. On the posterior aspect of the trochlear notch, it is guarded by a process that is known as the olecranon process. Whereas anteriorly अगर आप notice करें तो यहाँ पे एक tongue-like projection है, and this projection or process is known as coronoid process. So basically the trochlear notch is guarded posteriorly by the olecranon process जो कि size में काफ़ी बड़ा है, और anteriorly it is guarded by the coronoid process. So this notch is known as trochlear notch because it lodges the trochlea of the humerus above. So basically this articulation is forming the elbow joint along with the help of the radius. Here, as you can see that we have the olecranon process. So in the state of extension of the forearm, what happens that this olecranon process will get fixed into the olecranon fossa that lies on the posterior aspect of the distal end of the humerus. Now coming towards the lateral aspect of the upper end of the ulna, यहाँ पे you can observe कि यहाँ पे आपको एक fossa यानी कि एक डिप्रेशन नज़र आ रहा है. दिस डिप्रेशन इज़ नोन एज द रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना. सो बेसिकली जैसा कि हमने रेडियस में डिस्कस किया था, जिसके लोअर एंड पे हमें मीडियल एस्पेक्ट पे अल्नर नॉच नज़र आई थी, जिस पे अल्नर हेड यानी कि अल्नर लोअर एंड जो है वो आर्टिकुलेट करता था. इसी तरह अल्ना के लेटरल एस्पेक्ट पे हमारे पास यहाँ पे रेडियल नॉच होती है, वेयर द हेड ऑफ द रेडियस इट आर्टिकुलेट्स ओवर हेयर एंड फॉर्म द सुपीरियर radio-ulnar joint. Just below the trochlear notch, यहाँ पे you can see over here we have a roughened surface and this is known as the ulnar tuberosity. So basically ulnar tuberosity पे यहाँ पे हमारे पास brachialis muscle की attachment होती है, जबकि जो olecranon process है यहाँ पे the triceps brachii muscle gets attached over here. Now moving towards the shaft of the bone. तो जैसा कि हमने रेडियस में डिस्कस किया था, अल्ना ऑल्सो सिमिलरली हैज़ 3 बॉर्डर्स एंड 3 सर्फेसेस. तो जो इसके रेडियल नॉच की तरफ जो आपके पास बॉर्डर ट्रैवल करता है जो कि पॉइंटेड बॉर्डर है, दिस इज नोन एज द इंटरऑशियस बॉर्डर, एंड द अदर नेम ऑफ दिस बॉर्डर इज एक्चुअली द लैटरल बॉर्डर ऑफ द अल्ना. हेयर वी हैव द एंटीरियर बॉर्डर and here we have the posterior border of the ulna. So the surface that lies between the anterior and the posterior border is known as the medial surface. The surface lying between the interosseous and the anterior border is known as the anterior surface, and the surface that lies between the interosseous and the posterior border is known as the posterior surface of the ulna. Now coming towards the distal end or the lower end of the ulna, तो यहाँ पे you can see that the lower end of the ulna is actually shaped into a disc-shaped structure. This is known as the head of the ulna. और अगर आप पीछे से notice करें तो posteriorly यहाँ पे आपको एक process नज़र आएगा. This is known as the styloid process of the ulna. So basically the styloid process of the radius was lying laterally, whereas that of the ulna is actually situated a little posteriorly and medially. So this head of the ulna basically articulates with the
अल्नर नॉच ऑफ द रेडियस, जो कि हमारे पास रेडियस के लोअर एंड पे प्रेजेंट थी, तो यहाँ पे ये दोनों आर्टिकुलेट करते हैं. सो नाउ फॉर द साइड डिटर्मिनेशन ऑफ दिस बोन, जैसा कि आई हैव टोल्ड यू दैट द रेडियल नॉच ऑलवेज लाइज ऑन द lateral aspect. Then we have the interosseous border, that is also known as the lateral border. और जो आपके पास लोअर एंड है वहाँ पे जो स्टाइलॉइड प्रोसेस है वो थोड़ा पोस्टीरियरली एंड मीडियली लाई करता है. तो इन पॉइंट्स को अगर हम माइंड में रखें तो अकॉर्डिंग टू दीज पॉइंट्स दिस इज एक्चुअली अल्ना ऑफ द राइट फोर आर्म. Now, talking about the articulations between these two bones both are of the right forearm. तो जैसा कि I have told you, they have three articulations. One is the superior radio-ulnar joint, then we have the interosseous joint in between them, and then inferiorly we have the inferior radio-ulnar joint. So यहाँ पे आपके पास जो head of the radius है, it articulates with the radial notch on the proximal end of the ulna, and it forms the superior radio-ulnar joint. In between these two bones, as we know that both of them has the interosseous border. The interosseous border of the radius is lying medially, whereas the interosseous border of the ulna lies laterally. So these two borders, they are having a membrane attached to them that is known as the interosseous membrane. So basically बीच में आपके पास ये दोनों बोन्स interosseous membrane के थ्रू अटैच होती हैं. इसी तरह अगर हम इन्फीरियरली बात करें तो यहाँ पे as we know that we have the ulnar notch on the lower aspect of the radius. तो जो ulnar head होता है it articulates over here and it forms the inferior radio-ulnar joint. So this is all about the radius and ulna osteology. I hope so कि इस वीडियो से आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो गई होगी. Thanks for your time and keep watching Let's Medicine.